voltage is same. So based on this logic, I'll थोड़ा सा solve करें इसको. मान लो यहां से करंट आया I, यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा I1, रेजिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहां पे करंट हो जाएगा I2. वो मैं बाद में अभी प्रूव कर दूंगा that I1 will be equal to I2. Now what is the voltage across this resistance? 6 volt plus minus 6 volt, and they are in parallel. So based on this logic, let's solve it quickly. Based on this logic, this implies I1 will be equal to 6 by 3, that will be 2 amperes. That is your I1. And I2 will also be 6 by 3, that is 2 amperes. कहाँ से लिखा मैंने ये? Ohm's law. कोई बड़ी बात नहीं है. Which law I am using? Ohm's law. Based on that logic, answer क्या हो जाएगा इसका? Choice A. What will be his choice? A. 2 amperes of current. Please do remember it. 2 amperes of current. Okay? So let's go to the next topic. वो होता टोटल करंट. आई कैन सी व्हाट यू आर सेइंग. एक सेकेंड, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. ही इज आस्किंग यू करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस. each that is the reason we are saying it is only 2 amperes. Done. Good. And if they were asking, अगर वो तुमसे पूछते कि what is the current flowing in total circuit, वो होता 4 amperes. I agree. That would be 4 amperes. ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को देना. तो ये समझ में आ गया. और आगे चले. क्वेश्चन नंबर 37. Ohm's law can also be taken as the statement for Soman, let me tell you, most of the laws in physics, they are totally based on the conservation of energy. Okay, so Ohm's law is also based on the conservation of energy. Yes. So बिना ज़्यादा कुछ सोचे, remember the answer and tick mark it. Ohm's law is the use or the application of the law which is based on the conservation of energy. ठीक है जी, चलो. Question number 38. Oh, we have one more circuit. You can expect any circuit to come in the question paper. What should be the reading of the voltmeter in the circuit given above? कहाँ लगा है voltmeter? ये लगा हुआ है voltmeter, ये वाला. इसकी वोल्टेज पूछ रहा है वो कितनी है. वो सॉल्व करना पड़ेगा हमको पहले सर्किट को थोड़ा सा. आओ देखें जी. ये 1 and 1 ohm कैसे हो गए ये बताओ पहले. 1 ohm and 1 ohm, they are in series or parallel? 1 ohm और 1 ohm, they are series in parallel. जल्दी से बताओ. यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे, they are in parallel. शाबाश. So what is the total resistance of these two resistors combined? 0.5 ohms. कितना हो गया? 0.5 ohms. 1 into 1 divided by 1 plus 1. 1 into 1 divided by 1 plus 1 कितना हो गया? 1 by 2. 1 by 2 कितना हो गया? 0.5 ohms. Now this 0.5 ohms comes in series with 1 ohm. और सॉल्व करें अब. अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस जैसे ये थोड़ा सा था, बस अब तो क्लियर है. So total resistance of the circuit now can be written as 1 plus 0.5, that is 1 plus 0.5, that is 1.5 ohms. This is the total resistance of the circuit. What is the value of the voltage connected in the circuit? 1.5 volt. कितना है? 1.5 volt. Resistance कितना है? 1.5 ohms. Current कितना हो गया? निकालो. I will be equals to V by R. We are simply using the Ohm's law. Put down the value. V is 1.5 volt. This implies. And R is total 1.5. So current is 1 ampere. Current in the circuit is 1 ampere. Now this current in the circuit is flowing through this resistance और यहाँ पे वो एक voltage बनाएगा और वो वोल्टेज आपसे पूछी है.
This is what he is asking you. A current of 1 ampere is going to flow and across this resistance, and ये voltage पूछी है उसने आपसे, ये वाली voltage, और ये voltage ohms law से कितनी हो जाएगी? ये जो मीटर वाली है, मैं इसको V डैश बोल देता हूँ, तो V डैश हो जाएगा I into R. I is 1 ampere, resistance is 1 ohms, answer is 1 volt. ध्यान से, कहाँ पे है 1 volt? ये रहा choice C. Choice C is the answer. 1.5 ओम कैसे आया? सोमन ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है 1 ओम. This is 1 ohm. This 1 ohm is in series with the result of this parallel. What is the result of this parallel? 0.5. तो this बन गया 1.5. अभी क्लियर है? Fantastic. ठीक है? So resistance total हो गई 1.5. वोल्टेज है 1.5. तो करंट हो गया सर्किट में 1 एम्पियर, वो निकाल लिया हमने. वो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू 1 ohms and then it results in a voltage of 1 volts. Clear? Great, good, nice. I'm happy it's clear. चलो, अच्छा क्वेश्चन है. एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन, it has appeared in एनडीए. चलो जी नेक्स्ट आइए. What is short circuiting? ये मैंने कल भी बताया था आपको. During the short circuiting what happens? The current flow will suddenly increase. बिकॉज तुम दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट रेजिस्टेंस को बाईपास कर रहे हो. आया कल क्वेश्चन याद? रेजिस्टेंस को बाईपास कर रहे हो तो करंट सडनली बढ़ेगा. सो करंट इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली. यस, दैट इज द शॉर्ट सर्किट कंडीशन. चॉइस सी इज द आंसर. करंट इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली. ठीक है जी. एंड आई हैव अ फीलिंग आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक. Current and electricity. I think it is the last question. Let me just check. अगर हाँ जी लास्ट ही लग रहा है मेरे को ये बिल्कुल. आओ जी एक क्वेश्चन बचा है. Let's do this. Again it's a statement based question. Let's complete it. When you walk on the woolen carpet and bring your finger near the metallic handle of a door, an electric shock is produced. कभी कभी लगता है ना चार्ज हो गया, ऐसे थोड़ी स्पार्किंग सी होती है, ऐसे लगता है या शॉक लग गया, ऐसे थोड़ा शॉक लगता है. What is happening? Charge is transferred from your body to the handle. It could be possible. It could be possible. I think it is the answer. आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. See, the whole concept is about charging and current flow. There is no chemical reaction. There is no concept of temperature. There is no process of the equilibrium thermal. Yes. आगे ज़्यादा सोचना नहीं है. Is the answer. Charge is transferred from your body to the handle. Clear? So this was the coverage of all the important topics related to your current and electricity. ये प्रैक्टिकल किया था, बहुत अच्छी बात अगर प्रैक्टिकल किया था. ठीक है, तो एज प्रोमिस्ड ये तो मैंने करा दिया आपको. अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है, अभी मेरे पास टाइम है 5 minutes. आई विल बी डूइंग इट. दैट इज द ऑप्टिक्स. वन हैज टू डू द ऑप्टिक्स. ओके या सो हमारे पास जो भी 3-4 दिन बचे हैं एनडीए से पहले, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैडेट्स, जो बाकी भी सुन रहे हैं मेरे को. इस बार भी क्वेश्चन आए थे ऑप्टिक्स में से, तो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलमोस्ट हो गए कवर. वन लास्ट इंपॉर्टेंट जो रियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बचा हुआ, और थोड़ा सा शुरू करते हैं उसको विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. एंड लेट मी, आई नीड टू ओपन अप दैट पेज. जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर. लेट मी क्लियर इट फर्स्ट. दिस इज ऑल क्लियर. So we are going to go for read mode. This is it. So one of the most important topic of NDA, so we are going to present you. This discussion will continue. ऐसा नहीं कि आज हो गया जो होना है, कल भी चलेगा. ये कराना मेरा responsibility भी है. I will complete it. चलो जी. The principle of working of periscope is based on only reflection, refraction, reflection and refraction, so on.
You need to understand what is periscope. और basic से मैं diagram बना दूँ. Periscope is an equipment which enables you to see the objects placed above or below you. Ships में लगा होता है, submarine में लगा होता है. कहाँ लगा होता है? Ships में या submarine में. A ray of light enters, it reflects. A ray of light enters, it reflects, and finally the image can be seen here. And these are your mirrors. उसकी image यहाँ पे और उसकी image यहाँ पे. This is how you see the object. Okay, so it is totally based on reflection. It is totally based on reflection. And just for your knowledge, mirrors की जगह आप prisms भी लगा सकते हो. You can connect prisms or mirrors. The only difference is in prism we will be using total internal reflection. What do you use? In prisms we use the concept of total internal reflection to make a periscope. ये लिखते रहो क्योंकि कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं, जो एक्स्ट्रा डाटा साथ में होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, सो इट कुड बी बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आल्सो. प्रेफर क्या करते हैं? प्रिज्म्स. ये भी क्वेश्चन आया है. प्रेफर क्या करते हैं? व्हाट डू वी प्रेफर इन पेरिस्कोप? प्रिज्म्स. उसका रीजन है कि प्रिज्म्स में लॉस ऑफ लाइट कम होता है, लॉस ऑफ इंटेंसिटी कम होता है. ओके, मिरर्स में लाइट एब्जॉर्ब करेगी एट एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो देयर ड्यू टू दैट देयर विल बी सम लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. इन प्रिज्म्स देयर विल नॉट बी मच इन लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. ठीक है जी, ये लॉजिक याद रखेगा. हाँ, चलता किसके बेसिस पे है? इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. If a concave mirror of focal length 10 cm is immersed in water, its focal length will. Focal length of mirror is not dependent on the material of refractive index. या refractive index of material, sorry. लेंस फॉर्मूला याद होगा, उसमें N2 V2 आते थे, है ना. यहाँ पे मिरर में कुछ ऐसा नहीं है. It doesn't change. Focal length is independent of it. Yes. लेंस में नहीं है, मिरर में चेंज नहीं होता, लेंस में चेंज हो जाएगा. सो इट रिमेन्स अनचेंज्ड. फॉर मिरर्स फोकल लेंथ उसका जो बन गया वो बन गया. ठीक है, इसके काफी क्वेश्चंस हैं, अराउंड 60 क्वेश्चंस हैं जितना मेरा एस्टिमेट है. आई एम अवेयर ऑफ दिस. सो इट विल टेक एटलीस्ट 2 डेज तो लगेंगे. आज कल लगेगा, परसों भी लगेगा. आओ कंटिन्यू रखें. नेक्स्ट आइए जी. The sun is visible to us a little before the actual sunrise and little after the actual sunset. The little after, ओए बाद में रिपीट हो गया. I'm really sorry for that. वो पूछ रहे रीजन क्या है इसका. पहले तो कह क्या रहा है वो सुनो. What he is saying, first listen to that. अब मैं थोड़ा डायग्राम से समझाऊं. Imagine this is our earth. This is our earth. अर्थ के अराउंड क्या है? एटमॉस्फेयर. क्या है? एटमॉस्फेयर. Let us say sun is somewhere here. When the ray of light enters into the atmosphere, it deviates. What happens here? Refraction. It's a bending of light. It refracts. तो रिफ्रैक्शन की वजह से सन आपको यहां दिखेगा. ये है उसकी रियल पोजीशन. इट विल अपीयर समवेयर देयर. तो जल्दी दिखेगा आपको, ऐसा सोच लो. अभी ऊपर आया नहीं है, आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऐसे धीरे 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 ऊपर आ रहा है. थोड़ी देर में दिखेगा. मैं थोड़ी देर में ऊपर आना था, जल्दी दिखेगा. थोड़ी देर में ऊपर आना था, जल्दी दिखेगा. रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन बाय व्हाट? बाय द एटमॉस्फेयर. आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मिरर की जगह लेंस अगर होता, फिलहाल ये तो ये समझ में आ गया. मैं वो आंसर भी कर देता हूँ. ये समझ में आ गया.
दैट व्हाई सन अपीयर्स अर्ली. ठीक है. सो बिफोर आई कंप्लीट ऑलमोस्ट मैं लेंस वाला कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको. अगर मिरर की जगह लेंस होता उसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंस? आओ क्लास 12th में चले. 1/f इज इक्वल टू n2/v. सॉरी एक सेकंड, आओ प्रॉपर लिखें इसे. 1/f इज इक्वल टू n2/n1 minus 1. It will be 1 upon r1 minus 1 upon r2. आया कुछ याद? क्लास 12th का जब आपने एग्जाम दिया होगा या पढ़ा होगा, n2 n1 are the refractive index. We used to call this as lens maker formula. n2 is the refractive index of the lens. n2 is the refractive index of the lens. n1 is the refractive index of the material outside. If I increase n, अब यहां से आंसर ढूंढना पड़ेगा. अगर हम n1 को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. अगर n1 बढ़ेगा, ये टर्म कम हो जाएगी, ये टर्म कम हो जाएगी. ओवरऑल टर्म कम होने का मतलब मीनिंग होगा ये ओवरऑल टर्म कम हो रही है. दैट मीन्स focal length will most of the times increase, क्योंकि inversely proportional है, क्योंकि inversely proportional है. ठीक है. और एक, जब आई होप आपने बोर्ड दिया है क्लियर, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता था क्लास 12 के सीबीएसई क्लास में बोर्ड में. वो कहते थे अगर n2 n1 के बराबर हो जाए, if lens is immersed in a medium having refractive index same as the medium, है ना, टीचर्स ने कराया होगा आपको, बहुत बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है. तो फिर वो लेंस दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं. वो दिखने का मतलब क्या है? वो डिसअपियर हो गया ऐसा लगेगा. तो यहां से 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0. 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0. That means in this case focal length will be approaching to infinity. That means lens is no longer existing. लेंस इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. या तो ये आपका आंसर है लेंस के लिए. एनडी में क्वेश्चन आया था मिरर्स के लिए. ठीक है. तो बेटा मैं अभी आपको छोड़ूंगा मैथ्स की क्लास के लिए. ऑप्टिक्स की मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है. आई हैव इंट्रोड्यूस फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट. थोड़ा रिवाइज करके आओगे तो बेटर रहेगा डेफिनेटली. कल आप थोड़ा रिवाइज करके आओगे ऑप्टिक्स, जो मैंने क्वेश्चंस भी आपको भेजे हैं, रिवाइज करके आओगे बेटर रहेगा. सो विल मीट टुमारो. आई विल स्टे विद माय वर्डिंग. मैं इसको कंप्लीट करा के रहूँगा, डोंट वरी. सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे. देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड विश यू गुड लक टू. ठीक है जी. चलो बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.
Yes, welcome. Good evening. Good evening. जल्दी से